એમ રૂટ છે. બસ ડન કરું. Now today we start our next 2 tan theta 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equal to tan square theta by 2. 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta is equal to tan 3 theta. We use this formula to solve our MCQ. Now next we start again. First MCQ. First MCQ. First MCQ, which is tan inverse x. Tan inverse x is equal to y mod of x less than or equal to 1. Then sin inverse 2x 1 plus x square is equal to ln is equal to ln. ऑप्शन है हमारा 2y b minus 2y c pi minus y upon 2 एंड डी है ऑप्शन हमारा पाई माइनस 2y. पाई माइनस 2y. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है फर्स्ट tan inverse x is equal to y, that implies x is equal to tan y. Okay, equation 1. Now sin inverse 2x 1 plus x square. Now replace x with tan y from the equation 1 is equal to sin inverse 2 tan y 1 plus tan square y equation 1 is equal to sin inverse sin 2 theta. Sin inverse sin 2 theta. Now here, so which is also in, यहाँ पे देखो what is the range, minus pi by 2 to pi by 2, mod x is less than or equal to 1, which is given. So it is a range of sin inverse also. So don't compare, and I'll write directly 2 theta 2 theta. Okay, now replace theta. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, व्हाट इज अवर थीटा, सॉरी 2y. So y is 2y sin 2y, which is our answer, which is option A. तो ये हो गए हमारे tan इनवर्स रिलेटेड फॉर्मूला. ओके, now start with another sum related to tan inverse, related to
tan inverse. I erase this. And क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन tan inverse x is equal to y. X belongs to R. Here x belongs to R. Then cot inverse 1 plus x square minus 1 upon x is equal to what is our option? 2y minus 2y, pi minus y upon 2 and pi minus 2y. Okay, now let's start again. Same. Tan inverse x, which is given, is equal to y. So x is equal to tan y. X is equal to tan y, which is equation 1. Now क्या आ जाएगा हमारा? Now cot inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x is equal to cot inverse under root 1 plus tan square, x is replaced with tan square y, 1 minus 1 upon tan y. From equation 1. So here we get cot inverse 1 plus tan square y, स्क्वायर रूट में है हमारा, स्क्वायर रूट में है, वो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर y अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y विच इज सेक स्क्वायर y, और स्क्वायर रूट में से यहाँ पे x बिलोंग्स टू r दिया है. So we write directly sec y minus 1 upon tan y. Sec y minus 1 upon tan y. Whenever you get sec and other than sin and cos formula, first convert it into sin and tan form. So cot inverse 1 upon sec is converted 1 upon cos y minus 1 और tan कन्वर्ट हो जाएगा sin y upon cos y. So we get cot inverse 1 minus cos y upon sin y. How it cancel? देखो, taking an LCM, denominators are cancel out each other. So cot inverse, अब ये क्या आ जाएगा? तो there is no formula for, तो first यहाँ पे cot inverse है, we want cot inverse into bracket, for that 1 minus cos y, तो वो आ जाएगा 2 sin square theta by 2. What is sin y? 2 sin y by 2 cos y by 2. 2 cancel out each other. Sin y, so we get cot inverse tan y by 2. As we know, a result tan inverse x plus cos inverse x, tan inverse x plus cot
cot inverse x is equal to pi by 2. From this result, we write it here. Cot inverse जो थीटा है हमारा is equal to pi by 2 minus tan inverse tan y by 2. कहाँ से लिया हमने? यहाँ से. Now it is directly comes, so pi by 2 minus y by 2, which is pi minus y upon 2. This is our answer, which is our option C. Please see carefully. For this kind of MCQ, to solving this kind of MCQ, you must remember all the trigonometric formulas. Other than you don't able to solve. So please remember all the formulas. That's why I write it from the right hand side of our, which is, so that's why you remember the formula. If you don't know, so I write here. Now let's begin. अब कौन सा ले लेंगे? अगेन दूसरा सम ले लेते हैं हम लोग. Now another MCQ related to tan inverse based on given formula. So tan inverse x is equal to y. यहाँ पे आ जाएगा हमारा जितना चेंज है वही मैं कर देती हूँ. Okay, so tan inverse x is equal to y. 0 less than x less than 1 upon root 3. Then tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square is equal to blank. What is our options? So फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 माइनस वाई अपॉन 2 3y, फिर है y माइनस 3/2 और लास्ट वन है हमारा 3y माइनस 5 अपॉन 2. 3y माइनस 5 अपॉन 2. So how we solve? Same as tan inverse x is equal to tan inverse x is equal to tan by given, which is our equation 1. Now try to solve. Same as do it yourself and तो कैसे करेंगे? Same as now tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square is equal to tan inverse. Now substitute 3 tan y minus tan cube y upon 1 minus 3 tan square y. कहाँ से लिखा हमने? From equation 1. So tan inverse with क्या आ जाएगा हमारा? This is the formula of tan 3y. कहाँ से लिखे हमने? Our last formula tan 3 theta. So according to that we get tan of 3y. Suppose यहाँ पे 0
1/√3 है पाई में। 10 में कहाँ पे 1/√3 मिलेगा, पाई/3। सो मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स बाई एक्स है, 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 लेस देन 10 बाई 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लेस देन, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/√3, तो कहाँ पे मिलेगा, पाई/3। नाउ वी वांट 3 बाई, सो 0 लेस देन 3 बाई लेस देन पाई, तो ये कहाँ पे आएगा, 0 to पाई। सो 10 इनवर्स की रेंज क्या है, -पाई/2 टू पाई/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, तो 0 to पाई में, सो दैट्स वाई इट इज 3 बाई, दैट इज इट इज 3 बाई, विच इज अवर आंसर, 3 बाई our option B, option B, 0 to pi, so 3y belongs to 10 inverse range which is -पाई/2 to पाई/2। कोई कह रहा है मैम मुझे तो रेंज ही नहीं पता है, आई डोंट नो द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो द रेंज ऑफ, I write it here, range of inverse function, range of inverse function, तो sin inverse x रेंज क्या है हमारी, क्लोज इंटरवल -पाई/2 टू पाई/2, दैट मीन्स आवर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, cos inverse x close interval 0 to pi, 0 to pi first and second quadrant, and tan inverse x is equal to open interval -पाई/2 to पाई/2। तो देखो सपोज दिस इज आवर यूनिट सर्कल, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई/2, और यहाँ पे -पाई/2 भी आता है, तो माइनस साइन इनवर्स, देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, और कॉस इनवर्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स की जो भी रेंज है हमारी 0 to पाई में, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कवर्ड, सो दैट्स व्हाई वी हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो वी राइट इट हियर 3 बाय डायरेक्टली, राइट इट हियर 3 बाय डायरेक्टली। Okay, got it. I assume you got it, all the things. Now, another sum which is also similar to, जिसमें आपको कंडीशन चेकआउट करनी है। फर्स्ट जो भी थीटा गिवन थीटा वो रेंज में लाना है, आफ्टर दैट you are able to solve, because the last option, if you don't check out the conditions in last option you have a mistake in science form. Now we take another tan inverse related sum. क्या है हमारा सम, ले लेते हैं एक और, डिफरेंट, आई टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड ये आ जाएगा हमारा थर्ड सम। फोर्थ सम है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन a माइनस a लेस देन x लेस देन a बिलोंग्स टू r प्लस देन tan इनवर्स अंडर रूट a minus x a plus x is equal to a minus x a plus x is equal to first as we do in previous sums. According to that our solution will start the given term which is y is equal to cos inverse x by a. That implies we get cos y is equal to x by a. Cos y is equal to x by a. That means यहाँ पे थीटा रिप्लेस हो रहा है cos y is equal to x by a. तो कोई बोलेगा मैम यहाँ पे तो है ही नहीं x by a. Then how we get? तो कैसे करेंगे ना? tan inverse अंडर रूट a minus x a plus x. For getting x by a, divide the equations by a. So tan inverse ये क्या आ जाएगा? डिवाइड द इक्वेशन बाय a. सो डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. सो 1 minus x by a 1 plus x by a. Now it's replaced directly. Tan inverse x by a is replaced with cos y which is our equation 1 plus cos y. कहाँ से लिखा हमने? From equation 1. So tan inverse